Thank you, ladies and gentlemen from the media, for being here today. You've already seen the trailer. Most of these occasions happen when all of us get together and we introduce ourselves to you and we talk about the film, and lots of nice things are said about each of us, but I thought it would be better that if we talk to each other and find out what we think about each other. And perhaps you will get some inkling of that as the conversation goes. Ramu, I'd like to initiate the conversation with you first. I have a member from my blog, from my EF group, who is some sort of an intellectual, and when he came to know that I was having a press conference today for the release of Sarkar 3, he sent me a short note, and I think that I would like to just read it out to you, and then maybe we can talk about it. He said, RGV has Ayn Rand bluntness. Ayn Rand, the great writer, in his style which suits his themes in a different way. Crime in his themes is in the eyes of the beholder. His characters make their own laws, which is rather challenging for an audience suppressed by protocols in our system. We are a nation of youth caught in a traffic snarl. All of them are on their own 2 feet, standing, pushing, pulling, or doing whatever it takes to move. And watching over this commotion is a calm mind that makes its own rules. I presume that he's talking about Sarkar. अमित जी, आपने सबसे सवाल तो कर लिया। मेरा सवाल आपसे है जी कि जब रामू जी ने आपको कॉल किया और बताया कि भाई सरकार 3 करनी है, तो आपके जहन में क्या चल रहा था और आपने क्यों हामी भरी? सर, वो क्या है कि अगर 1 हो गया, 2 हो गया, तो 3 होना चाहिए ना। वही है, सिंपल है। हर एक चीज़ में हम लोग बोलते हैं 1, 2, 3, और लोग दौड़ने लगते हैं या भागने लगते हैं या किताब पढ़ने लगते हैं या चुप हो जाते हैं। तो मैंने सोचा 3 ठीक है। सर, जैकी जी के लिए कहा जाता है कि उनके सामने जितना बड़ा एक्टर होगा फिर वो फिर सोचते नहीं है क्या है, तो यहाँ आपके सामने है वो। कैसा रहा जैकी, कैसे लगे आपको, किस तरह का काम किया उन्होंने, कितनी देर टिके रहे आपके सामने? नहीं, आप क्या कहना क्या चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, जैकी जी कितनी देर टिके रहे आपके सामने, क्योंकि उनके सामने जो होता है फिर वो पीछे नहीं हटते, चाहे अमिताभ जी भी हो। क्योंकि इनके सामने मैं पीछे हट जाता हूँ। Amit Hello, sir, this is Atika Ahmed Faruqi here from Rishte Cineplex Colors. I wanted to ask you कि आप पद्मश्री हैं, पद्म भूषण हैं, पद्म विभूषण हैं, भारत रत्न रहता है वो भी मिल जाएगा। आप हाल ही में मिस्टर प्रणब मुखर्जी से मिलकर आए अपनी फिल्म पिंक के लिए, और अब 7 अप्रैल को सरकार 3 रिलीज हो रही है। क्लियरली द एंग्री यंग मैन इज बैक एज द एंग्री ओल्ड मैन ऑन स्क्रीन, और वक्त इस वक्त पूरी तरह से आपका है। सर, इस फिल्म सरकार 3 ने आपके करियर पे बहुत पॉजिटिव इन्फ्लुएंस रहा है इसका, लेकिन बिकॉज इस कैरेक्टर में बहुत गुस्सा है और एक वर्ड है जलाल, वो बहुत ज़्यादा है इसमें। कभी ऐसा होता है कि बाय द एंड ऑफ द शिफ्ट इसके चेहरे पे तो ज़्यादा कुछ नहीं दिखाई देता, बट वी कैन क्लियरली सी लॉट ऑफ इट इज़ गोइंग, समथिंग इज हैपनिंग इनसाइड द कैरेक्टर विच मीन्स अ लॉट ऑफ एनर्जी इज जनरेटिंग इनसाइड द एक्टर। डू यू फील रियली टायर्ड एट द एंड ऑफ द शिफ्ट, या इस एक दिन के शूट के बाद आप कैसा फील करते थे? सुभाष नागरे का क्या हैंगओवर रहता था आपके ऊपर? कुछ नहीं, घर गए, खाना खाया, सो गए। मतलब आप वहाँ हैं? हाँ सर। या मेरा नहीं है। In the meanwhile, can I ask a question to सर, Ramu? मेरा सवाल Carry on. मेरा सवाल यह है सर कि फिल्म में एक डायलॉग है कि राजनीति बहुत एक गंदी चीज़ है, दलदल है, जिसमें मैं जाना नहीं चाहता। 80 के दशक में आप राजनीति में थे, उसके बाद कभी आप मुड़कर वापस राजनीति की तरफ नहीं आए,
तो क्या इसे रियल लाइफ से आप इत्तेफाक रखते हैं जो डायलॉग आपने पर्दे पर बोला? मान्यवर, कम से कम 200 फिल्में मैंने की हैं और न जाने कितने किरदारों को किया मैंने। कहीं आपको लगा कि मैं वैसा हूं जैसा मेरा किरदार था? नहीं। तो अगर मैंने कोई डायलॉग बोल दिया कि मुझे राजनीति दलदल लग रही है, तो इसको आप मेरे निजी जीवन से क्यों आप इसका ताल्लुक कर रहे हैं? वो मत कीजिए। हमारा निजी जीवन अलग होता है। फिल्मों में बहुत कुछ बोलना पड़ता है जो कि किसी और ने लिखा है। वैसी भावनाएं हमारी होती नहीं है। भावना से मुझे याद है, भावना जी नमस्कार। Ladies and gentlemen, I just want to say that, you know, it's a very rare occasion to have Bhavna Somaya, who's just been rewarded with the Padma Shri, and we want to congratulate you. पूछूं तो पीसी में मज़ा नहीं आएगा मुझे. तो Amit ji, your electrifying performance, you know, and yet your, I mean, such a great voice, and your actions, you know, it is so justified. Even today, I mean, you are able to, I mean, when you're on the screen, it's only you and you. How do how would you like to tell us about it? Like, you know, how do you maintain it? Thank you so much, madam, for all these very kind words. I'm least deserving of it. I've always believed that the writer and the director are the main people. The writer writes, the director conceives it, passes it on to the writer. He becomes the actor. And most of what you see in all my films are indications that I get from a director. He will tell me where to walk, how I should speak. Many a times if we are preparing at home, we come prepared with certain notions as to how a scene needs to be done. But when we get onto the set, we find that it is completely wrong. There's no scope for argument, I believe, on set. If I have to convey something or disagree with any point, I would rather do it during the time the narration is happening. Debate, discuss, agree, disagree, whatever you have to do, offset. Once you're on set, then you follow what the director says. That's what I believe in. But I think that there has to be a certain belief in the story, in the character that you're playing. And much before we actually conceived Sarkar, Ramu and me used to meet quite often, informally. And I always was very intrigued by one aspect of life, and the life of people who are in power. And I believe that it's not all as transparent and easy as it seems to people outside. They are individuals, they are human beings, they lead a normal life as well. But yes, they are given powers which give them access to certain kind of actions and deeds which affect millions and millions of people. Where that comes from is guarded by their own political belief, their party that is in power, and if they are in power, what the government decides to do. But what intrigued me was that every powerful person has a family, has a home, has people who are close to him. And no home, I think, can be known to be absolutely perfect and free. There are opinions, there are differences of opinions, everyone has a viewpoint. So what if over the dining table in the morning or at breakfast, this powerful man who is the #1 person of the country or a state or the entire universe is having a normal breakfast with his family, and one member of his family, could be his wife, could be his son, his daughter, disagrees on certain issues. It could be anything. It could be, you know, which car you're going to drive or why you're wearing a particular dress. And there is an argument. And what if this powerful man is irritated with this member of his or her family and is in that mood asked to attend a very grave meeting which is going to decide a government decision which is going to affect millions of people? Does it affect that decision making of his or not? And I believe that if you're in that kind of mental state where you're irritated with something, does that irritation carry forward to this very important decision that you're going to make, which is going to affect millions and millions of people and their lives? That is what intrigued me, and that is what I shared with Ramu
when we used to have informal sittings for Sarkar. And so most of what you see in the film is an incorporation of a lot of these thoughts. It's commonly known as palace politics, and it happens in almost all palaces, not necessarily these grand structures, but even a small house can become a palace. And that intrigued me a lot. And I think Ramu was one person that truly understood the context of what we discussed several times, and it was absolutely brilliant the way he incorporated it in his screenplay and in his films. सर नीलिमा कुलकर्णी हियर फ्रॉम IBN लोकमत. बच्चन सर, सवाल आपसे है. शत्रू वाढतच राहणार, मी मागे हटणार नाही. हा तुमचा संवाद आम्ही या ट्रेलरमध्ये पाहिला आणि खूप छान वाटलं. इसके अलावा और भी मराठी डायलॉग्स इसमें होंगे क्या? क्योंकि आपकी मराठी फिल्म का हमें इंतज़ार है, लेकिन हम सुभाष नागरे देख के खुश हो जाते हैं. तो और इसके अलावा और भी मराठी डायलॉग्स इस फिल्म में होंगे क्या? You know, I always, that's one of the other things that I always feel when I work on a character, and this we discussed with Ramu, that if I'm a Maharashtrian, then there should be some words that I speak in Marathi, even though the Hindi language film is more universal in the country. I say that because I just felt that when characters like these are in the privacy of their very intimate people, they normally speak in their own mother tongue. So I thought that if he's going to spend time with his wife, he should speak in his own mother tongue, and that's why we did it. शिवांगी दिस साइड फ्रॉम आज तक. मेरे सवाल बच्चन सर आपसे हैं. फिल्म जो है वो राजनीति के इर्द गिर्द है, पूरी पटकथा जो है वो राजनीति पर है. आजकल देश में एक बहुत बड़ी राजनीति गरमाई हुई है. गुरमेहर कौर की बात करें हम, शहीद की बेटी की, उसको लेकर जिस तरह से देश में माहौल है, आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं सर. हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, पीकू पिंक जैसे फिल्में आपने की हैं. जब इस तरह की घटना होती है तो एक नागरिक होने के नाते सर आप कैसा महसूस करते हैं? जो मैं महसूस करता हूँ वो मेरा व्यक्तिगत विचार होगा. आपसे कहूँगा सार्वजनिक हो जाएगा. नमस्कार. शुक्रिया सर. यहाँ पर जानना चाहूँगी कि क्वीन एलिजाबेथ ने आपको अपने एक बहुत बड़े जलसे में... मैडम सरकार की बात कीजिए, उनका सरकार अलग है. Yeah, we just take two last questions. Amit sir, my question is to Amit sir. Amit sir. Hi Amit. Amit sir, एक सवाल इधर. अमित वो है. सर आपके लेफ्ट में. अमित सर. सर दिस साइड. सर आमतौर पे हम ये सुनते हैं, एक्टर्स कहते हैं कि हर किरदार के लिए उन्हें मेहनत करनी पड़ती है और कुछ सोचते हैं, कुछ होमवर्क करते हैं. आपने तीनों जो फिल्म है, सरकार, सरकार राज और अब सरकार 3, आपका किरदार एक स्थिर किरदार है कि उसमें कोई बदलाव शायद नहीं होता है, वही इंसान है, वही उनकी विचारधारा है. तो क्या आपके लिए आसान होता है, या हर बार ये तीनों सीक्वल जो तीनों फिल्में हैं आपने अलग अलग तरीके से अपने किरदार को निभाने की कोशिश की है, या अगर कोई मेहनत की है तो किस तरह से उसमें बदलाव लाने की कोशिश की? हर फिल्म में प्रयत्न करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है. और जो आप कह रही हैं कि क्योंकि आपका किरदार वैसा ही है जैसे 1 में था, 2 में था और 3 में है, लेकिन किरदार के जो सामने किरदार हैं वो बदलते रहे. और मेरा ऐसा मानना है कि मेरा जो अभिनय है वो उस पर निर्भर करता है कि कौन मेरे सामने है, उसके साथ मेरा व्यवहार कैसे होगा, वो किस तरह अपनी वाक्य बोलेगा, वो किस तरह एक्टिंग करेगा. वो अगर सही नहीं करेगा तो मैं भी सही नहीं लगूँगा. इसलिए हमारे लिए ये अंतर होता है. तो तीनों में अगर पूछा जाए तो सबसे कठिन या आसान कब रहा आपके लिए? अभी तक जितने भी प्रयत्न हुए हैं सब कठिन रहे हैं. Amit ji, this one last question, more guys. angrier actually, you know, like it's like a strike back thing. तो इससे थोड़ा related question है कि तो इसमें like you speak very little actually, तो it's more of your expression and thing like, तो how much you had to, I mean to say, पिछले जो सरकार आई थी वो लगभग 8-9 साल पहले था, तो you had to go through that character, like how do you really work on it? नहीं, जैसे कि मैंने कहा कि जब रामू हमको बताते हैं कहानी और उसकी पटकथा बताते हैं तो समझा देते हैं कैसा, और उसमें हम लोग घुल मिल जाते हैं. ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है. अगर हम लोग कलाकार अपने आप को मानते हैं तो ये हमारा कर्तव्य है और काम है.